Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 28th December, that is Wednesday, and we are here with the Hindu analysis of Wednesday. Suspension continues as 49 more member of parliament face action. Okay, so yesterday also we discussed it that some of the MPs actually were actually suspended. So and yesterday वो कल वाला देखो यहाँ पे डिस्कस किया था ना, 78 MPs suspended, opposition calls it murder of democracy. So 78, इससे पहले 14 और हो चुके थे. So I had discussed it in yesterday's class that total 92 MPs have been suspended. आज और लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, 49 more MPs suspended. So 92 में 49, if you add it, it becomes actually 141. So total 141 MPs have been suspended. है ना, लिखा ना, in an unprecedented move, 49 more Lok Sabha MPs were suspended for unruly behavior on Tuesday, bringing the total number of opposition lawmakers from both the houses to be 141. यानी total 141 MPs को, including the Lok Sabha and Rajya Sabha MPs, have been suspended so far. Despite the suspension, repeated adjournments, 3 bills were passed. The 3 key criminal law reform bills were taken up for consideration in the Lok Sabha. That is what we should be knowing it. ठीक है. So 3 bill को पास किया गया, ये सब वो बता रहे हैं. After Tuesday's suspension, only 44 members belonging to India parties which are now opposing the BJP and a common platform remain in the Lok Sabha. So I hope you are aware there is an alliance called as India Alliance. This is an alliance of opposition parties, right? So इस पूरी पार्टी की जितने भी टोटल अपोजिशन पार्टीज के अलायंस है उसके सिर्फ 44 MPs अब लोकसभा MPs बचे हैं आफ्टर द सस्पेंशन एंड ऑल. दैट इज व्हाट belonging to the India parties are actually inside the Lok Sabha. That is what you should be knowing it. There were no suspension yesterday, यानी कल राज्यसभा में कोई सस्पेंशन नहीं हुआ, लोकसभा में हुआ. कल की बात हो रही है. So chairman Jagdeep Dhankar also expressed anguish and all. So these were the things in the news. Just have an idea. अब चूंकि इसकी बात हो रही है पार्लियामेंट की, you should be knowing it that the parliament in India comprises of Lok Sabha, Rajya Sabha and the president. I hope you are aware, है ना. Article 79 talks about it. तो इसके बारे में पढ़ना, what is bicameralism, unicameralism, ये क्या होता है, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा. What is bicameralism and what is unicameralism? Please go and read these things, है ना. Okay, let's move on to the question. Who among the following has become the most expensive player in IPL history? Your options are Pat Cummins, Mitchell Starc, Virat Kohli, Rohit Sharma. मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल हिस्ट्री में कौन बने आपको बताना है. दिस वाज इन द न्यूज ऑन द फर्स्ट पेज. तो सबसे कॉस्टली ऑक्शनिंग होता है ना बिफोर द आईपीएल सीजन, है ना, ऑक्शनिंग इज डन. सो विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर? यस, मिशेल स्टार्क. वेरी गुड. अरवा पूनावाला. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिशेल स्टार्क. and this is the person, right? है ना. देखो, मिशेल स्टार्क becomes most expensive player in IPL history, goes to KKR with 24.75 करोड़. सो कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना. तो 24.75 करोड़ में उनका ऑक्शनिंग हुआ. ठीक है, यू कैन सी इट हियर, है ना. एंड पैट कमिंस का हुआ 20.5 करोड़ में. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस. अच्छा, एक और क्वेश्चन इस साल आया था, आई थिंक एलेट ने पूछा था, विच आईपीएल क्रिकेटर इज प्लेइंग इन द सेम टीम सिंस द बिगिनिंग ऑफ आईपीएल. जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक वो खिलाड़ी सेम ही टीम में खेल रहे हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? कैन एनीवन टेल मी? आई थिंक दिस वाज आस्क्ड इन, एज फार एज आई रिमेंबर, एलेट में पूछा था दिस ईयर, दैट विच इज द प्लेयर क्रिकेटर हु इज प्लेइंग इन द सेम आईपीएल सिंस द बिगिनिंग ऑफ द आईपीएल टिल नाउ, एंड दैट प्लेयर इज फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी के है. द आंसर, उसमें जो ऑप्शन था, ये धोनी भी हो सकता, बट उसमें जो ऑप्शन था वो विराट कोहली था आंसर. ठीक है, ठीक है. यस, ऐसे अरवा पूनावाला, आई थिंक यू आर आल्सो करेक्ट, बट द ऑप्शन एक्चुअली गिवन इन दैट एग्जाम, सो देयर वर 4 ऑप्शंस गिवन एंड वन ऑफ देम वाज विराट कोहली फ्रॉम आरसीबी. ठीक है, सो दैट वाज द आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर, है ना. बाकी लोग कितने कितने में, यू कैन सी इट, है ना. सो द फेमस वंस यू शुड बी नोइंग इट. एक और फर्स्ट पेज में आर्टिकल थी, होस्ट लास्ट मिनट विड्रॉवल लीव्स हिस्टोरिक साइंस कांग्रेस इन द लर्च. एक्चुअली क्या है, साइंस कांग्रेस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 109th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस वाज सपोज्ड टू हैपन इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. जनवरी के आसपास होना था, बट दे हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ. लास्ट मिनट विड्रॉल लिखा ना है, सो दे हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम दिस
Okay, and this makes it unlikely that the annual 3-day event traditionally inaugurated by PM and with historic stretching back to pre-independence and all. तो ये बहुत दिन से होते आ रहा है इंडिपेंडेंस से ही पहले से है ना. So ideally it was supposed to happen perhaps in the first week of January, but not since the lovely professional university has withdrawn and all. So the probability is less that it will happen in the January. तो देखो अब क्या होता है, let's see है ना. तो इसको भाई बेसिक आइडिया होना चाहिए. एक और चीज ये न्यूज में था, साइड में आर्टिकल थी ये वाला, तमिलनाडु मिनिस्टर कन्विक्टेड फेसेस डिस्क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना. दैट आई होप यू आर अवेयर that under representation of people's act we have discussed it even when the Rahul Gandhi's disqualification was in the news, that if a person is found guilty of more than 2 years, then of course the moment the person is found convicted, he or she will be disqualified from being an MP or MLA. और जब MP MLA से disqualify हो जाएगा तो मिनिस्टर से भी disqualify हो जाएंगे of course. Okay, so that is what you should be knowing about this. ठीक है, so you should go and read about this as well. Okay, let's move on. Okay, just before moving on, this is a CLAT success kit. So download our app, BYJU'S exam prep app, go to CLAT section, and there actually we'll be discussing this. Okay, so mini marks ebook study plan will be provided and all. And we are having a CLAT 2025 comprehensive course. If you have any query, call on this number 95388 95678. Okay, let's move on to the editorial. सो एडिटोरियल में जो देखो अब मैंने बताया कई बार, देखो ये दोनों जो है ना ऑथर बेस्ड आर्टिकल होती है ना. सो दीज रिप्रेजेंट्स द ओपिनियन ऑफ द ऑथर्स, और यहाँ पर ऑथर का नाम नहीं मेंशन होता है इस दोनों में. सो एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स, दिस इज एन एडिटोरियल रिटन बाय, ये एडिटोरियल होता है जो कि एडिटर्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर राइट्स है ना. सो दे आर, इसमें नाम नहीं लिखा होता है ऑथर का. सो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ओपिनियन ऑफ the editorial board of the Hindu newspaper. Okay, so let's start with this one, deep import of Article 370 verdict. I hope you are aware, abhi recently Supreme Court का verdict आया था Article 370 abolition में and all. And so that was actually 5 August 2019 को this was actually removed and all, and a repeat. So days after the Supreme Court's judgment and regarding 5 August 2019 presidential order and all, and so that is what she is talking about. So sorry. So Jammu Kashmir was given some autonomy under Article 370. अच्छा, आपको कुछ और पता होना चाहिए. Please go and read about Article 371 से लेके 371I तक. Article 371I. Because there are still some special provision for some states. ठीक है, जैसे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में there are some places. ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ना, because I have seen in some exam this question was asked. ठीक है, कि जैसे नागालैंड में there are some special provision, तो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है. ठीक है, so these types of questions they have asked in the past. So go and read Article 371 से लेके A से लेके Article 371 capital I तक. ठीक है, so go and read it. खैर, so and it's custody handling of the parliament's demotion and division of states. तो ये बता रहे हैं कि division of states तो पहले क्या था, तो जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था ना, and that state, Jammu and Kashmir state, got divided into 2 union territory, Jammu and Kashmir Union Territory and Ladakh Union Territory. Okay. Much of the commentary has dealt with the judgment's implication for the rest of the country, which are far-reaching. It undermines the rights of states vis-a-vis the union, even on critical issues such as statehood and division and all. इसी पे बात करिए, actually she is slightly critical of the order and all of the Supreme Court. So there are other 3 key elements which have been less discussed. What the verdict means on the ground for Jammu and Kashmir, Ladakh and all. So what actually the people think and all. ठीक है. Then author is talking about the State Reorganization Commission. ठीक है, सो 1953 में एक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था, एंड इट वाज सपोज्ड टू रिकमेंड द एक्चुअली द चेंज ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट. ठीक है, सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ दैट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन व्हिच वाज सेट अप इन 1953? B.R. अम्बेडकर, जस्टिस फजल अली, K.M. पानिकर, सरदार पटेल. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या सही जवाब है? सबको लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन and subscribe to our channel as well. Yes, who was the chairman of State Reorganization Commission set up by Central Government in 1953? उसके बाद 1956 में पूरा State Reorganization Act हुआ था. 7th Constitutional Amendment was passed. उसमें बहुत सारी चीजें चेंज की गई थी. ठीक है, and that is why you should be knowing it. Yes, the right answer is Justice Fazal Ali. B is the right answer. ठीक है, so आपको याद रहना चाहिए. So Justice Fazal Ali Commission बनाया गया था. ठीक है, and that's called as also known as State Reorganization Commission. It recommended कि कैसे state of boundaries should be changed, because there have been demand for linguistic reorganization of states.
लैंग्वेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज स्टेट्स बनाए जाए, ठीक है. सो दिस कमिटी रिकमेंडेड how the in what case the language should be made should be the reason for the state I mean for making a state and all. जैसे आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश तो आंध्र बेस्ड बना था, ठीक है. तमिलनाडु इज तमिल लैंग्वेज बेस्ड एंड ऑल. महाराष्ट्र इज मराठा बेस्ड बेसिकली, है ना. So basically linguistic reorganizations of states have happened, है ना. So yes, Jagriti Raj, you are right. Justice Fazal Ali is the right answer to this question, ठीक है. Then the author is talking about what are the opinions and about it. Silence with that is ambiguous in Jammu, disappointed in Kargil, welcoming Ladakh with reservations and omnibus in the valley. तो ये बता रहे हैं कि करगिल में लोग कुछ डिसअपॉइंटेड है, लद्दाख में लोग हैप्पी हैं बट विद रिजर्वेशन. रिजर्वेशन मींस दे आर नॉट ऑल पीपल आर हैप्पी, देयर आर सम पीपल हु आर नॉट. सो यही सब बता रहे. सो जम्मू's ambiguity centers on experience and all for. In Ladakh, the Kargil's disappointment stems from the fact that its majority Shia wishes to retain its ties with Jammu Valley. देखो एक्चुअली इस रीजन में दिस इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और ये लद्दाख है. और करगिल डिस्ट्रिक्ट ये वाला है, ये वाला है ना. देखो लेट मी राइट इट क्लियरली, ठीक है. देखो दिस वन लेट मी मेक इट इज जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है. एंड ये पूरा जो है इज लद्दाख, ठीक है ना. नाउ यहाँ पर एक जगह है, दिस इज द प्लेस कॉल्ड एज करगिल डिस्ट्रिक्ट समथिंग. आई एम मेकिंग रफ स्केच, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बट समवेयर हियर, ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर के हिसाब से करगिल डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स वांट टू रिटेन टाइज विद द वैलीज. तो ऐसा लग रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑथर दैट परहैप्स द करगिल वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बिकॉज करगिल में मोस्टली शिया पॉपुलेशन इज देयर, शिया मुस्लिम पॉपुलेशन इज देयर. ओके, सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज talking about. Leh welcomes of separation from valleys tempered by the desire for an elected administration instead of lieutenant governor. So Leh जो है यानी लद्दाख में जो लेह है ना, so उन लोगों ने वेलकम किया है that they wanted that yes we want to get separated from Jammu and Kashmir but they want that instead of lieutenant governor there should be election. जैसे यहाँ पर lieutenant governor रूल कर रहे हैं ना, मतलब the administrator is lieutenant governor and there will be no election. यहाँ legislative assembly नहीं होगी. जम्मू एंड कश्मीर में yes there is proposal of legislative assembly but that is not in the case of Ladakh. Okay, so that is what you should be knowing it, ठीक है. Now the most severe impact is undoubtedly in the valley where the verdict has reinforced a widespread belief that Kashmiris are resented by the rest of India and their voice is repeatedly silenced and all. तो यही सब बता रही है. She is actually slightly, I think, appears to be slightly critical of the government and all. Means that this decision, the circumstances in which Ramnath Kovind took the decision and all were draconian. So she is actually criticizing these things. The section 144 was imposed and all, forbidding gatherings of 4 or more people. So that is what you should be knowing it. Just have an idea. So means she is criticizing the judgment of Supreme Court that the Supreme Court should have done something more, etc. A blanket acceptance of alleged security concerns can be dangerous and all. These are the things the author is talking about. Then she is quoting a Pulwama terrorist attack which happened on 14th February, I think 2019, where actually 40 paramilitary troops laid their lives and all. So that is what is also being talked about here. Then the author is quoting Justice Sanjay Kishan calls. If you लोग इतना detail नहीं जाना है, ठीक है. So you are not supposed to go that much in detail. That's not for you. Now there are some judgments of Supreme Court in the past and some articles which were in the news regarding Article 370 judgment. So which judgment of Supreme Court held that federalism is the basic structure of constitution? Because यहाँ पे बात ये हो रही थी कि can state be converted into union territory? Is there any provision? And if it's the provision, does it affect the federalism or not? That was also a question. तो उसकी भी बात हो रही थी कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कौन से जजमेंट में मेंशन है? इंदिरा साहनी केस, एसआर बोमई केस, गोलकनाथ केस, कुलदीप नैयर केस. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कहां मेंशन है, किस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में? एनीवन? Yes, the right answer is SR Bomai case. So when we teach actually in our paid classes, we teach the basic structure of constitution and all. There I discussed. Okay, so B is the right answer to this question. The next is which of the following article of the constitution gives parliament the power to change the boundaries of the state? Article 356, 352, Article 3, Article 1. कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, स्टेट का नाम एंड ऑल?
So the right answer is Article 3. So C is the right answer to this question. हाँ, इससे पहले का B आंसर था yes, जागृति राज, you were right. इसका आंसर है C, है ना. आप देख सकते हो formation of new states and altering of areas, boundaries or names of existing states. Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state and all. So that is what you should be knowing about. Yes, Arva Poonawala, you are right. C is the right answer. ओके एक साइड में आर्टिकल थी एडिटोरियल. अगेन इसमें नाम नहीं मेंशन है. इट मींस इट रिफ्लेक्ट्स द ओपिनियन ऑफ द हिंदू एडिटर्स एंड ऑल. सो रेगुलेशन ऑफ नेट वर्ल्ड मस्ट एड्रेस प्राइवेसी कंसर्न, सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स. एक्चुअली क्या, अभी रिसेंटली टेलीकम्युनिकेशन बिल लाया गया. सो इसी से रिगार्डिंग बता रहे हैं कि द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनेट वर्ल्ड मस्ट एड्रेस प्राइवेसी कंसर्न एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर. Now, since the author is talking about privacy, the Supreme Court in one of its orders said that right to privacy is a fundamental right. Right to privacy is a fundamental right. So what is the name of judgment? उस judgment का आप नाम बताइए जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि right to privacy fundamental right है. Second, please tell me that Supreme Court said that right to privacy is a fundamental right under which article? So कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की कोर्ट करके बोला था कि ये right to privacy fundamental right है और कौन से judgment में? Okay, yes. Please tell me. I'm waiting for the answers. ठीक है. So that is what they're talking about. 46-page statute. Statute मतलब वही कानून, law. So I mean the proposal of the bill that leaves existing regulatory structure largely intact while simplifying bureaucratic procedures such as applying for a license and all. ठीक है. तो कुछ चीज को आसान कर दिया जाएगा. Bureaucratic procedure. That is what these things are being discussed. कि license वगैरह लेना आसान हो जाएगा ना. Process that is yet to be digitalized है ना. So digital operators को या telecom companies को perhaps license लेना शायद आसान हो जाए ना. While also having access to district and state level authorities for permission, dispute resolution and all. The bill also lets the state internet industry, long touted as a way for the least some remote areas get connectivity and all. Okay, the bill has been welcomed by industries body. तो bill को तारीफ किया गया. Industries की जो body है industrialists है, they have actually praised these things and all. Over half of India's population is on the margin of connecting world and the bill could help. है ना. लगभग आधी population जो वो इंटरनेट से कनेक्टेड है and all. और इस बिल से काफी मदद मिलेगी एंड ऑल. ठीक है. राइट टू प्राइवेसी, पुट्टा स्वामी केस. यस, अरवा पुनावाला, वेरी गुड. प्रिंटेड फ्रॉम 1419-21. यस, जागृति राज. एक्चुअली पुट्टा स्वामी केस इन 2017 सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, अंडर आर्टिकल 21. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ. ठीक है ना. And under this, Supreme Court said, under the judgment of Supreme Court Puttaswamy case, that right to privacy is a fundamental right under Article 21. ठीक है. These concerns are not merely academic and considering past allegation of state-sponsored snooping and all. Snooping मतलब क्या होता है भाई? Violation of privacy and all, है ना, spying and all. The bill tries to deal with the spamming concerns and all. तो ये सब बता रहे हैं. इसमें इतना डिटेल वर्ड्स में इतना आपको नहीं जानना है. For the CLAT students that not कि इतना डिटेल नहीं पूछेंगे. Just have a basic idea about these things, है ना. जैसे judgments, Article 21, these are the things will be discussed. So बता रहे the government must address these concerns. क्या क्या concerns है ना, open mind and all. जैसे वही privacy concern एक है ना, जैसे snooping वगैरह का है ना. So these are the things they are talking about. Spamming concerns है ना. Spamming समझते हो ना, जैसे कि अगर unnecessary emails, SMS आ रहा, that's called as spamming and all, है ना. So ये सब का कंसर्न को गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो उसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. टेलीकम्युनिकेशन बिल के एकदम डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. दूसरा है टैक्स HFSS फूड व्यू इट एज अ पब्लिक हेल्थ इंपेरेटिव. अब देखो क्या है, एक चीज होती है HFSS फूड. ये क्या होता है? हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड. एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ कोर्स दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ. तो इसको कहते हैं, जैसे अगर आप ईट राइट इंडिया एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का है ना, तो उनकी वेबसाइट पे जाइएगा ना, सो इट्स मेंशन्ड है ना. तो रिडक्शन ऑफ फैट शुगर एंड सॉल्ट, इन ये थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए, फैट शुगर और सॉल्ट. सो वी शुड अवॉइड और वी शुड टेक लेसर फैट, लेसर शुगर एंड लेसर सॉल्ट, है ना. खास कैसे कहा था कि इंडियंस जो है सॉल्ट बहुत ज्यादा खाते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड. तो ये थोड़ा कम करना चाहिए. और खास ये ट्रांस फैट, दिस इज वेरी डेंजरस. एंड जैसे जितने भी खाते हैं ना, चिप्स बिस्किट दीज थिंग्स एंड ऑल, है ना. फिर जो डिफरेंट तरह का जो स्पेशली जंक फूड्स में है ना, you will find these types of things, the trans fat, and this is very actually not very good for the health. ठीक है ना. So HFSS reduce करने के लिए salt, fat और sugar को reduce करना होगा on our intake, है ना. So जैसे examples में जैसे chocolate, cakes, biscuits, है ना, soft drinks, butter, ice cream. So these are actually the examples where you will find these HFSS, which is unhealthy food. इसको unhealthy food माना जाता है. Okay, so these are considered as unhealthy. And इससे नुकसान क्या होता है?
तो बीमारी हो सकती है जैसे डायबिटीज, शुगर और समथिंग लाइक दैट, हेल्थ कंसर्न्स, हार्ट डिजीज। ऑफ कोर्स अगर आपने देखा होगा रिसेंटली वी आर सीइंग मोर नंबर ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक्स इन इंडिया, स्पेशली द यंग पीपल आर आल्सो गेटिंग, अगर स्पेशली आफ्टर कोविड-19 आपने देखा होगा a lot of people are actually getting heart attacks at a very young age. पहले समझते थे कि 40 प्लस को आता है, अब we are seeing now even as less as 20 people 20 years है ना, 15-20 years people are actually getting the heart attacks and all. तो वो एक रीजन ये है कि अनहेल्दी फूड ना खाया जाए, है ना, so we need to eat actually take the healthy food, है ना. So according to the World Bank report 2019 70% of all overweight and obese people live in low and middle income countries. ठीक है, ओवरवेट ओबीस, अब क्या होता है फैट अगर आप खाओगे तो ओबेसिटी बढ़ेगी, आदमी मोटा होगा, ओके, और ओबेसिटी विल डायरेक्टली अफेक्ट द हार्ट हेल्थ, आपको पता होगा शायद, है ना, कि हार्ट हेल्थ पर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है ना. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन इंडिया हैज स्काईरॉकेटेड फ्रॉम 38% to 65%. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो बर्डन है वो और बढ़ते जा रहा है. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. तो यही सब चीजें जो ऑयली चीज होता है, चॉकलेट है, कन्फेक्शनरी आइटम, स्वीट्स, मिठाई है, केक्स है, जैम्स, हनी, बटर, येड, है ना, ये सब बहुत रेगुलेटेड खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कभी कभार हो गया तो ठीक है, बट वी शुड नॉट ईट टू मच दीज थिंग्स, अदरवाइज इट विल बी वेरी अनहेल्दी. तो सबसे अच्छा क्या है कि अगर आदमी खाए भी तो मतलब फ्रूट्स वगैरह खाए, ठीक है, फ्रूट्स में विटामिन भी रहते हैं, जो नेचुरल चीज है ना, विच इज गिवन बाय गॉड इज मोर आई मीन बेटर रादर देन यूजिंग ऑयली स्टफ्स या मतलब जंक फूड्स एंड ऑल. तो ये सब अवॉइड करें, फ्रूट्स वगैरह खाएं जो हेल्दी आइटम्स है, दैट वी शुड बी टेकिंग, है ना. सो अल्ट्रा प्रोसेस फूड प्रोसेस सेक्टर इन इंडिया विटनेस द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ एंड ऑल. सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काफी सारे ग्रोथ वगैरह वी हैव सीन. अबाउट 50-60% ऑफ एडिबल शुगर, सॉल्ट एंड फैट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज कंज्यूम्ड बाय प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री. तो जितने भी हम लोग शुगर, एडिबल शुगर, फैट, सॉल्ट खाते हैं वो फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में, यानी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में जो FPI कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस होने के बाद आता है ना. There's a global trend of utilizing fiscal measures to combat obesity, है ना. ग्लोबल ट्रेंड है कि ओबेसिटी को हाँ कंट्रोल करना है ना, मोटापा. दैट्स टैक्सेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव मींस टू रिड्यूस दिस. तो वो टैक्सेशन की बात करें, देखो यहाँ पे जो हेडलाइन भी था, टैक्स HFSS फूड्स, है ना. मतलब ये है कि एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए जिसमें फैट है, सॉल्ट है, शुगर ज्यादा है, उसमें टैक्स हाई लगाइए तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा. So when the price is high, it will discourage people to buy. अगर कोई चीज महंगी होगी तो लोग कम प्रोबेबिलिटी है ना खरीदेंगे. तो वही ऑथर की ये राय है कि जैसे केरला ने फैट टैक्स लगाया था, केरला ने, कि अगर जो भी आइटम है जिसमें फैट ज्यादा होता है उसमें ज्यादा टैक्स लगेगा, वो महंगा हो जाएगा ताकि लोग कम खरीदें. सो दैट इज व्हाट द आइडिया है. सो बेसिकली द ऑथर इज फोकसिंग ऑन HFSS टैक्स, कि जो भी अनहेल्दी इस टाइप के फूड्स हैं उसमें ज्यादा टैक्स होने चाहिए. सो दिस विल एक्ट एज अ this will discourage actually people to go buy those products and all, ठीक है. So ये बात कर रहे हैं. Then the author is talking about आयुष्मान भारत we have taught in the paid classes. ये गवर्नमेंट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर पुअर्स एंड ऑल, है ना. सो गो एंड रीड अबाउट आयुष्मान भारत. इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट, है ना. टैक्स कैन ऑफर अ टारगेटेड एंड इफेक्टिव मींस टू कर्ब डेट्रीमेंटल कंजम्पशन एंड ऑल, है ना. तो वही बता रहे कि अगर टैक्स वगैरह इंपोज कर दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे लोग, दैट विल बी रिड्यूस्ड एंड ऑल, है ना. अनलाइक द टैक्सेशन ऑफ अदर सिन गुड्स सच एज टोबैको एंड अल्कोहल, HFSS टैक्स नीड नॉट टू बी यूज्ड एज अ मींस ऑफ रेजिंग रेवेन्यू. तो बता रहे जैसे सिन गुड्स जो होता है, जैसे टोबैको, अल्कोहल, ये सबको सिन गुड्स माना जाता है. उसमें भी बहुत हेवी टैक्सेस लगता है, लेकिन उसमें टैक्स जो लगता है उससे रेवेन्यू भी जनरेट होने की नियत होती है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा. तो लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि HFSS जो टैक्स है इस पर जो टैक्स लगाना है, यानी हाई फैट, सॉल्ट, शुगर कंटेंट वाले प्रोडक्ट में, उसमें इस नियत से लगाना ताकि लोग जो है कम से कम खरीदे. दैट शुड बी आवर मेन इंटेंशन, है ना. दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. खैर यही सब बात हो रही, दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. अब इतना परसेंटेज वगैरह GST ये सब नहीं याद रखना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ GST इज इम्पोज्ड ऑन व्हाट एंड ऑल, ठीक है. खाली आपको पता होना चाहिए कि GST की स्लैब होता है 5%, 5, 12, 18, 28, है ना. 5%, 12%, 18%, 28% और एक 0% कह सकते हो. सो दीज आर द स्लैब्स ऑफ GST, है ना. 0%, 5%, 18%, 28%, ठीक है. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इट, है ना. साइड में एक आर्टिकल, टर्बुलेंस इन साउथ. वी हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे एज वेल, दैट एक्चुअली फ्लड्स वेयर देयर इन साउथ तमिलनाडु. आपने देखा होगा ये सब फ्लडिंग हो गया है साउथ तमिलनाडु, इस सब रीजन में. एंड द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट साइक्लोन मिशवांग एज वेल. देखो यहाँ पे साइक्लोन की बात हुई है ना.
few days back, actually few weeks back I would say, it hit the Tamil Nadu and all, and the Thoothukudi district, Kanyakumari, ये सब देखो most affected region है ना, यहाँ पे Thoothukudi district है, और ये एक और कारण से न्यूज में था. It was in the news for one more reason, and that is this second space port of ISRO to be set up in Kulasekara Pattinam, which is actually you will find it in Thoothukudi district. ठीक है, तो ये आपको मिलेगा. This you will find it actually in Thoothukudi district, where you will find, जैसे एक तो ऑलरेडी है सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. The second one you will find it here. ठीक है, that is what you should be knowing it, है ना. तो दूसरा बनने जा रहा है एक्चुअली, दिस यू विल फाइंड इट इन थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ये बनने जा रहा है. एंड थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली हैज बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड्स एंड ऑल. ठीक है, जैसे एक आर्टिकल था, लाइव्स ऑफ 800 पैसेंजर सेव्ड एज रेलवे इंजीनियर स्टॉप ट्रेन एट श्रीवाई कुंतम रेलवे स्टेशन. एक्चुअली क्या होता है, अब देखो पटरी जो है ना, द रेल ट्रैक्स हैव बीन एक्चुअली डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड ऑल. तो ये भी वही उसी जगह पर हुआ है. ठीक है, ये भी वहीं पे हियर यू विल फाइंड इट, है ना. ये नीचे में यहाँ पे कहीं पे, ये भी समवेयर हियर एक्चुअली. सो फॉर्चुनेटली द ड्राइवर स्टॉप्ड इट एंड ऑल, एंड इससे एक्सीडेंट रुक गया. सो दैट इज व्हाट, है ना. सो दीज आर द थिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना. सो थूथुकुडी के डिस्ट्रिक्ट में देयर रिकॉर्डेड वेरी हैवी रेनफॉल एंड ऑल. सो दीज आर द थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड हियर. लिखा ना, देखो वही ट्रेन की बात हो रही है, अबाउट 800 पैसेंजर्स एक्चुअली वाज स्टॉप्ड एट द श्रीवाई कुंतम स्टेशन, है ना. सो दैट इज व्हाट वी शुड बी नोइंग अबाउट इट. ओके, एक और ओपिनियन में आर्टिकल, इंडियाज इथेनॉल करंट टर्म. देखो इथेनॉल प्रोडक्शन जो है ना, देखो क्या है, रिसेंटली COP28 हैपेंड. इस पर मैंने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लीज गो एंड वॉच इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द सेम यूट्यूब चैनल आई हैव डिस्कस्ड इट. इंडिया फेसेस अ टाइट रोप वॉकिंग विद रिगार्ड टू द इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, है ना. अब देखो क्या है, E20 एक इनिशिएटिव है कि जो इथेनॉल को ना पेट्रोल से ब्लेंड किया जाए, मिक्स किया जाए. वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स उससे फर्स्ट थिंग ये होगा कि पेट्रोल कम यूटिलाइज होगा. दूसरा ये है कि एक्चुअली द फर्स्ट इज द पेट्रोल यूटिलाइजेशन विल, आई मीन द यूजेज ऑफ पेट्रोल विल स्लाइटली गो डाउन. सेकंड थिंग इज इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्स एंड ऑल, और इंजन्स, ऑटोमोबाइल. तो उसमें जो टारगेट है कि देखो, है ना, वी हैव इंक्रीज द इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्रॉम 1.5% 2014 टू 10% एंड नाउ टू 20%. यानी 20% तक इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा. यानी अगर पेट्रोल मान लो जी, मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल है ना, सो इन 8 लीटर ऑफ पेट्रोल, अगर उसमें आइडियली जो है ना 800 ml ही पेट्रोल होगा और 200 ml जो इथेनॉल होगा, लाइक दैट. ठीक है, सो द टारगेट वाज दैट E20 टारगेट वाज टू बी अचीव्ड बाय 2025. ठीक है, जो टारगेट था 2030 था E20 का टारगेट, बट नाउ इट हैज बीन प्रीपोन्ड टू 2025. तो 2030 से पहले खींच के 2025 कर दिया गया. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट, है ना. एज एविडेंट फ्रॉम मिनिस्टर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल स्टेटमेंट इन मई, द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट अ मेजर ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फॉर मीटिंग द टारगेट. ठीक है, तो अब क्या होता है, इथेनॉल जो है ना ग्रेन से भी बनाया जाता है. सो व्हाट वी कॉल इट एज बायो इथेनॉल का कॉन्सेप्ट होता है ना, है ना. जैसे कैसे देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, इथेनॉल आर मेड फ्रॉम शुगर केन. ठीक है, और शुगर केन यू विल फाइंड अ लॉट इन ब्राजील. ठीक है, कॉर्न मतलब भुट्टा जो होता है, so you will find a lot of corn in America. So these are also used in production of ethanol or bioethanol, है ना, sugar cane and all, है ना. तो sugar cane से corn से ये ethanol भी बनाया जाता है. ठीक है, so that is what they are talking about. ठीक है, फिर जो sugar cane है molasses निकलता है ना उससे actually. ठीक है, so these are the things the author is talking about. खैर, न्यूज रिकॉर्ड सेट विद द सस्पेंशन ऑफ 141 MPs इन अ सिंगल सेशन. तो अभी तक टोटल इस सेशन में, यानी विंटर सेशन में 141 MPs को टोटल सस्पेंड कर दिया गया. वी हैव डिस्कस्ड इट इन द इनिशियल क्लासेस एज वेल, है ना. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो कहां से कौन कौन, किसके स्टेट से कौन कौन है आप देख सकते हो यहाँ पे. दे बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन सी इट हियर एज वेल. एंड दीज आर एक्चुअली द पीपल हु हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द स्टेट्स, एंड दीज आर एक्चुअली द people who have been suspended in the with respect to the political parties they belong to. ठीक है, so 38, जैसे कांग्रेस के 38 MPs have been suspended, 10 are left. ठीक है, so these are the things you should be knowing it. Okay, है ना. ये सब बता रहे हैं टोटल. So 95 MPs from Lok Sabha, है ना, टोटल 141 and 95 from Lok Sabha total, and 46 from Rajya Sabha has been suspended so far. ठीक है, okay, है ना. Then text and context में एक आर्टिकल, धारावी revamp in turmoil. ठीक है, so this is an article they are talking about. ठीक है, now आपको शायद पता है कि धारावी, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि धारावी is a news, what exactly it is. So it is actually one of the largest slum in the world. वर्ल्ड का सबसे बड़ा, one of the
लार्जेस्ट स्लम माना जाता है मुंबई में, यू विल फाइंड इट, ठीक है. इट वाज इन द न्यूज. एक्चुअली देयर हैव बीन सम प्रोटेस्ट रिगार्डिंग इट, रिमूव अदानी सेव धारावी, इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे. दिस वाज लेड बाय शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे एंड ऑल. ओके, इज नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट बट नॉट प्रो बिल्डर्स एंड ऑल. तो ये सब था, खैर न्यूज में था. सो देयर हैव बीन सम प्रोटेस्ट एंड ऑल. तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज धारावी. सो इट्स एक्चुअली अ स्लम, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम इन द स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन मुंबई, ठीक है. सो दैट यू शुड बी नोइंग इट, है ना. इट वाज फाउंडेड इन 1884 ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम एंड ऑल. इसकी पॉपुलेशन कितना है आप देख सकते हो, है ना. 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख के आसपास, है ना. ओके, now there's a question for you. Please tell me, Strait of Bab al Mandab connects which two water body? This has been in the news, इसीलिए हम पूछ रहे हैं. कौन से दो वाटर बॉडी को बाबल मंदब स्ट्रेट कनेक्ट करता है? रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, रेड सी एंड अरेबियन सी, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन मेडिटेरेनियन सी. बताइए. सब कोई ट्राई करेगा. एंड व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, देयर इज सम कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट. यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को सुइस कैनाल कनेक्ट करता है, सुइस कैनाल, ठीक है. अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल को आप कह सकते हो एक तरह से कि पार्क स्ट्रीट कनेक्ट करता है ना. अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन सी को कौन सा करता है? स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है, ठीक है. So here the right answer is B, Red Sea and Arabian Sea. Yes, Arva Punawala, Jagrati Raj, you are right. Netanyahu calls Modi to discuss maritime threat in Red Sea. So Israel started the call, says PMO, situated in Bab al Mandab. Situation in Bab al Mandab has been worsening, accompanied by Houthi attacks on container ships. तो अब देखो यही बाब अल मंदब यहाँ पे न्यूज में था, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग इट. देखो एक्चुअली क्या है, ऐसा कुछ कहा जाता है कि बहुत सारी शिप यहाँ से आती है. देखो ये सुइस कैनाल है ना, इजिप्ट का सुइस कैनाल. सो द शिप कम्स फ्रॉम हियर, है ना, and it goes like this. मान लो मुंबई की तरफ जा रहा है, कमिंग फ्रॉम इजराइल. सो यहाँ पे इजराइल है. सो यहाँ पे यमन है ना, यू आर सीइंग इट, हियर इज यमन. और ये वाला बाबल मंदब है, बाबल मंदब स्ट्रेट. ओके, so basically the ship was coming in somewhere here, and Houthis are actually from Yemen, and they have captured actually some of the ships, I think from Israel coming. ये न्यूज में था, आपको पता होगा. ये रेड सी है ये वाला. सो बेसिकली रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को यहाँ पे सुइस कैनाल कनेक्ट करता है, ठीक है. ओके, एंड रेड सी एंड अरेबियन सी को क्या कौन कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब, यही मैंने पूछा था. ओके, यस. एक और मैं पूछ रहा था कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कनेक्ट करता है यहाँ पे पार्क स्ट्रेट, है ना, विच इज एक्चुअली बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगा पार्क स्ट्रेट. यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे इंडिया. ओके, नाउ एक और जो था वो था कि अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी को, है ना. सो यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, देखो ये मेडिटेरेनियन सी है और ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है. इसको जो कनेक्ट करता है दैट्स स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है. दैट यू शुड बी नोइंग इट, बिकॉज ये सब पूछा जाता है एग्जाम में कई बार. आई हैव सीन दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, ठीक है. सो यहाँ पे जो आंसर था रेड सी एंड अरेबियन सी. सो बी इज द राइट आंसर. जैसे एक बार एलेट ने पूछा था, ये पूछा था ना, पनामा कैनाल, Panama Canal and Strait of Magellan. This was asked in the AILET last year. Strait of Magellan. Okay, then US launches multinational push to protect Red Sea from Houthi attacks. So this was in the news. Overnight earthquake in northwest China kills 126. Yes, actually क्या है कि China में somewhere here actually यहाँ पे India, this is China इतना बड़ा सा ना. So somewhere here actually the जगह है Haidong, Qinghai, China में, where actually the 5.9 magnitude earthquake happened. It's somewhere here actually the earthquake had happened. Okay, so just have an idea about that. एक चीज है, आफ्टर द क्लास इज ओवर प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो व्हाट इज फोकस, व्हाट इज एपी सेंटर एंड व्हाट इज हाइपो सेंटर. इसमें से दो जो होता है ना सेम चीज होता है, ठीक है. बट यू हैव टू टेल मी आफ्टर द क्लास इज ओवर. दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक. प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. नीचे आप कमेंट में लिखना है क्लास ओवर होने के बाद फोकस क्या किसको कहते हैं, एपी सेंटर किसको कहते हैं, हाइपो सेंटर किसको कहते हैं अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट में. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.